Hello students, good morning. How are you? I hope you are good in your houses. So today we are going to discuss about the first lesson of science 2, heredity and evolution. Before going to discuss about the heredity and evolution, we need to know about some basic concepts. Means what is the basic unit which is responsible for the heredity and evolution. So you know that what is tell me what is the basic building block of the body, or what is the building block of the organism? Obviously it's a cell. Okay, so generally cell has three main components, as we know, like outer membrane, which we call plasma membrane, then inside the plasma membrane there is a fluid like substance, which is the, yes, it is a cytoplasm. And inside the cytoplasm, or inside the center of the cell, there is a nucleus. What is? There is a nucleus. Okay, so basically these nucleus contain the unit which is responsible for the term that we are going to discuss, heredity and evolution. So what is inside the nucleus? So inside the nucleus there is a biological character, and that biological character is nothing but a genes. Okay, so first of all, अब देखो कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जिसे हम जीन्स कहते हैं, एक्चुअली ये कहाँ पर फाउंड होता है वो हमें जानना ज़रूरी है. सो न्यूक्लियस कंसिस्टिंग chromosomes. Okay, and inside the chromosome there is a DNA molecule, and these DNA molecule are made from very small active unit, that is a gene. Okay, so I hope आपको इतना समझ में आया होगा. So let's talk about the genes, or DNA molecule or chromosome. Okay, so mostly according to the living variation, there is a variation in the number of chromosomes also. Different organisms having a different number of chromosomes inside their cells. So let's talk about the human cell. So in a human cell there are 46 number of chromosomes. How many? 46 number of chromosomes. Okay, and these 46 number of chromosomes are exist in a pair. So obviously हम अगर पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2. ओके, so how many pairs of chromosomes are existed in the human cells? Good, these are the 23. Means these 46 chromosomes are found in a human cell in the number of 23 pairs. Okay, अब देखो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में हमने यही बेसिक पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा हम इसको यानी कि रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए. ओके, so in these 23 pair of chromosomes
there are 22 pairs which are known as autosomes. Okay, and there is a last one pair which is also known as a sex chromosomal pair or allosomes. Okay, and these allosome are responsible for the determination of the gender of a organism or gender of a individual. I hope you understand. Okay, so now we are going to discuss about our main topic, heredity and evolution. First of all, let's talk about the heredity. ओके, सो अब देखो हेरिडिटी यानी कि क्या होता है. सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाले कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, हाँ, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, जीन्स. मीन्स सिंपल डिफाइन अगर हम करेंगे तो कुछ ऐसी होगी. सो द प्रोसेस in which biological characters transfer from one generation to the next via genes. Okay, so the process in which biological characters transfer from one generation to the next via genes, it's called heredity. Or we can also say that the transfer of biological characters from parents to the offspring or the progeny. Okay, offspring, progeny, these are the similar words. Offspring means a baby. Okay, so this is a simple definition of heredity. And then let's talk about the evolution. Okay, so evolution is nothing but it is a variation or changes that occurs in an organism in the course of time. Okay, so we write the define. Evolution means gradual and slow changes that occurs in an organism over long period of time. ओके, अब देखो, जैसे आपने एंशिएंट ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, तो यानी कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है कि इंसान कैसे यानी कि विकसित हुए. तो आपने वो पिक्चर देखा होगा जिस पिक्चर में आपको यानी कि एंशिएंट ह्यूमन से लेकर तो टुडेज ह्यूमन तक आपको ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है. ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें, सो एंशिएंट पीपल्स आर लाइक एप्स. ओके, यानी कि बंदर की तरह थे, ऐसा हम कह सकते हैं. बट नाउ टुडेज ह्यूमन इज़ वेरी मच डेवलप्ड. ओके, इट इज़ इंटेलिजेंट. तो ये जो यानी कि चेंज हुआ है, ये चेंज ओवर 3.5 मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ. सॉरी, ओवर द, यानी कि इस चेंजेस को, यानी कि ह्यूमंस में जो ग्रेजुअल चेंज हुआ है वो 300 करोड़
ईयर्स में हुए। तो आप सोच सकते हो कि 300 करोड़ ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इतने सालों में ह्यूमन जनरेशन क्या हुई है, डेवलप हुई है। ओके, सो दैट इज़ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक यानी कि प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी मेड द डिफाइन ग्रेजुअल एंड स्लो चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन दैट आर इंक्लूडेड इनसाइड अवर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट क्वेश्चन inside the book, it is which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters. So from the introduction you already know about that component, and what is that? So it is a genes. Okay, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? That is a genes. Okay, then what do we call, second question, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? So इसका भी आंसर मैंने आपको अभी अभी यानी कि इंट्रोडक्शन में बताया है, दैट इज अ हेरिडिटी, और वी कैन कॉल्ड इट इनहेरिटेंस आल्सो। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज अ प्रोसेस through which physical and mental characters are transferred from parents to the progeny or parents to the offspring. And the third question, which are the component of DNA molecule? Means DNA molecule के components क्या होते हैं? So DNA molecules की अगर हम बात करें तो first component is a deoxyribose sugar, okay, जिसे हम पेंटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ओके, एंड द थर्ड वन इज अ न्यूक्लियोटाइड्स। सो ऑल द introductory part is over here, so I hope you understand. So thank you for watching.